everybody, welcome back to another video and another day of learning chemistry with Aska. Today we are going to start a chapter which is arguably the most popular chapter in O-level chemistry, and that is stoichiometry. So we're going to start with defining what stoichiometry really is. It is just a part of chemistry which involves using relationships between reactants and products in a chemical reaction to determine the quantitative data. So basically all the quantitative analysis that we're doing, कौन से reactants कितनी amount में आपस में react करेंगे to produce a particular product, और उस product की कितनी ज़्यादा amount बनेगी, क्या reaction 100% efficient होगा, क्या नहीं होगा, what are the factors that are going to determine the amount of product formed, moles किस तरह calculate करते हैं, moles होते क्या हैं, and all things quantitative are basically what we're going to study in this chapter. So we're going to start with something very basic, and we're going to start with defining what that is, and those are chemical formulas. Now, formula or formulae, which is the plural form of formula, it's kind of funny, right? Urdu mein bhi dher sare formulae, so I guess you guys can remember from that. So a formula is a chemical formula, basically tells you, it gives you important information about the number and the identity of the atoms that make up the smallest building block of that substance. And the smallest building block of a substance, ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात की है, वो होगा कि अगर हम मेटल्स की बात करें हैं या किसी एटॉमिक सब्सटेंस की बात करें हैं तो वो एटम्स ही अरेंज हुए होते हैं, तो those they are just existing in their atomic states like sodium metal, जो कि जिसका chemical formula होगा सिर्फ Na, like helium जो कि गैस है, नॉन मेटल है, and it's just this. जो कोवलेंट सब्सटेंसेस होंगे उनके जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स मिलके एक वो कोवलेंट सब्सटेंस बनाते हैं. तो उसमें जो फार्मूला होगा, फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला इज़ H2O, and ammonia, another very popular compound, उसका फार्मूला होता है NH3, और ये हमें बताता है कि इसके एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है. एंड सिमिलरली इन अमोनिया मॉलिक्यूल इसमें 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. इसी तरह आयोनिक सब्सटेंसेस के लिए वी डोंट यूज़ द टर्म मोलेकुलर फार्मूला like the way we use it for like the covalent substances. Ionic compounds may, if you guys remember, electrons transfer हो जाते हैं तो हम ions बना देते हैं, and so the smallest building block would be called a formula unit, not a molecular formula. So these are called molecular formula. Or and these would be called the molecules, right? And in ionic substances like NaCl, this would be the formula unit, not a molecule. And ये formula unit जो है इसका mass भी, इसका जो mass होगा वो molecular mass होगा, but इसका mass होगा formula unit mass in more like formal terms. Lekin you would see a lot of teachers using molecular formula for NaCl, and so उस पे परेशान मत होइएगा. ये common sort of एक the way to express ourselves is कि हम लोग generalize कर देते हैं, और ionic compounds के लिए भी उनके जो building blocks हैं उनके लिए हम molecular formula का लफ्ज़ use कर देते हैं. तो yep. So in ionic substances we have NaCl, and इसका formula बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि we take देखो molecules के अंदर तो उनकी arrangement है ना कि ये बना हुआ है molecule, तो आप उसका dot and cross structure बनाओगे and उससे आपको थोड़ा सा idea हो जाएगा. But with ionic substances इनका formula लिखने के लिए आप ion, पहले आप हमेशा पॉजिटिव आयन लिखते हो, ठीक है, उसके बाद आप नेगेटिव आयन लिखते हो. तो इन द केस ऑफ NaCl
आप क्या करोगे कि आपको पता है कि सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में है, इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम को आयन बनाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना होगा, तो इसका साइन आ जाएगा +1। सिमिलरली क्लोरीन जो है वो होता है 17th ग्रुप के अंदर, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो दैट विल फॉर्म अ नेगेटिव आयन विच विल बी कॉल्ड क्लोराइड। एंड जब आपने इसका फॉर्मूला लिखना है तो बेसिकली दोनों की जो पावर्स होती हैं वो दूसरे वाले के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 1 ही है तो इस तरह हम 1 करके लिखते नहीं हैं, सो वी जस्ट सिंपली कॉल इट NaCl। अब यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ like the ions that you can remember, so that अगर आपको कोई भी ionic formula लिखना आ जाए तो उसमें आपको problem ना हो। Now you are given the periodic table in your exams, right? So अगर आपको कोई ion याद नहीं आ रहा तो simply उसको करने का तरीका ये है कि आप उसका ग्रुप नंबर देखें, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनें कितने हैं, और कितने would it be easier for it to lose electrons, या फिर would it easier for it to gain electrons to complete its octet। तो अगर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हैं उसके आउटर शेल में, तो उसके लिए ज़्यादा इजी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके एक पॉजिटिव आयन बना दे, ना कि वो एटम जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन बनाए, राइट। बट इसी तरह अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल अप टू 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए इट्स मच मोर ईजी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ नेगेटिव आयन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कंपेयर टू कि वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे। तो ये लिस्ट will be helpful to you, but in case अगर आपको कोई भूल जाता है तो the periodic table is always there with you in your exams and you should make full use of it. So these are some popular ions. For example, potassium, sodium, lithium, they're all in the first group and have 1 single electron in the valence shell, तो वो एक lose कर देते हैं और positive 1 का ion बना देते हैं। Hydrogen also loses 1 electron, उसके पास होता ही 1 electron है। This guy right here, or Argeniums लिखा हुआ है, but this is actually silver। इसका ये पुराना नाम लिखा हुआ है तो आप इसको सिल्वर की तरह लिख लें, एंड पीरियोडिक टेबल पे आपको सिल्वर Ag के नाम से नज़र आएगा। सो समटाइम्स कुछ एलिमेंट्स जो हैं जिन उनके बहुत पुराने वाले लैटिन नेम्स यूज़ होते हैं, नॉट इन रियलिटी बट ओनली इन द सिम्बल्स। तो ये दिस इज सिल्वर। मर्करी 1, सो अच्छा ये जो 1 लिखा है या ये जो 2 लिखा हुआ है, दैट is basically telling you the oxidation state, and oxidation state is basically, इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम redox के बारे में पढ़ेंगे, reactions के बारे में in the chapters, but it essentially tells you कि इसकी पावर क्या है। एंड अगर 1 लिखा हुआ है अर्जेंटम के साथ तो इसका मतलब है Ag+1 होगा। अगर मर्करी के साथ 1 लिखा हुआ है रोमन के अंदर तो उसका मतलब है कि Hg उसके ऊपर भी +1 का साइन होगा। इसी तरह अगर आयरन के साथ 2 लिखा हुआ है तो आप ये देख रहे हैं कि आयरन इज़ 2+, सुपरस्क्रिप्ट में 2+ लिखा हुआ है। टिन के अंदर भी 2+, lead 2 is Pb2+, copper 2 is 2+, iron 3 is 3+। अच्छा, अब आप ये भी नोट करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स के साथ 2 या 3 लिखा हुआ है रोमन्स के अंदर और कुछ के साथ नहीं लिखा हुआ। यूजुअली हम 2, 3 या 1 तब स्पेसिफाई करते हैं जब we're not sure कि इस पर्टिकुलर ये जो एटम्स है ना, ये बहुत एक सो जिस तरह कॉपर जो है वो कॉपर 1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर 2 में भी एग्जिस्ट करता है, आयरन 3 में भी एग्जिस्ट करता है, आयरन 2 में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह मैंगनीज जो है वो 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 7 के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। एंड सो जो एटम्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब मल्टीपल आयन्स में एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड्स, तो उनके लिए हम साथ स्पेसिफाई कर देते हैं। इसी तरह जो आयन्स हैं नेगेटिव, एन आयन्स कहते हैं उन्हें, उनके लिए
B, there's this list that you can use. Oxide is 2 negative, fluoride is F negative, single negative, because इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको गेन करने के लिए अपने ऑक्टेट को. And hydroxide is OH negative, sulfate is SO4 2 minus, nitrate is NO3 negative 1, carbonate is CO3 2 negative, ethanoate ये एक ऑर्गेनिक आयन बनता है जो कि एथेनोइक एसिड से बनता है, और इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे. सो फॉर नाउ दिस इज़ इट. एथेनोएट मैंगनेट 7 देखें इसके अंदर लिखा हुआ है. इसके अंदर जो मैंगनीज़ है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी. एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस अगैन. आई रिपीट दैट कि हम रीडॉक्स वाले चैप्टर में इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होएगा. आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट फॉर द पीपल हु अगर उन्होंने रीडॉक्स का ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया हुआ है. And MnO4 negative, dichromate 6 has again इसमें जो chromium है उसकी oxidation state +6 होगी. But overall this is chromium 2 O7 2 minus, phosphate is PO4 3 minus, thiosulfate is SOS2 O3 2 minus. Now it'll be a very good idea for you guys to really learn and basically learn these things by heart so that it's easier for you to construct molecular formulas. And क्योंकि periodic table देखते हुए भी time लगता है exam में, and time is money, guys. Time is money in exams, and you really don't want to be spending a lot on stuff जो कि आप थोड़ी सी पहले से अगर आप memory का use कर लें तो आपको इतना problem नहीं होगा. Okay, so let's do an example formula for an ionic compound जिसको हम लेते हैं कि we want to see a formula with calcium fluoride. Okay, तो हम exactly वही चीज़ follow करेंगे जो हमने कही है कि हम लिखेंगे कैल्शियम जो पॉजिटिव आयन है वो पहले, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा fluoride which is the negative ion ऊपर लिखा. And then we are just going to multiply, basically bring the superscript of one to the other's subscript. तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा. 1 यूजुअली हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, और हाँ साइन ट्रैवल नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड ट्रैवल करता है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है साइन के. पॉजिटिव आयन क्योंकि पता है आप पहले लिख रहे हो और जो सेकंड पे लिखा हुआ है वो नेगेटिव आयन वाला ही होगा, तो इसलिए आपको इस चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं होती. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को सुपरस्क्रिप्ट से सबस्क्रिप्ट में मूव करते हैं. तो दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर calcium fluoride. For the next stuff, I'll see you in the next video. Take care.